Hello बच्चों, let us solve this question. While comparing the ionization of hydrochloric acid with that of acetic acid in water, we find that though both of them are polar covalent molecules, former is completely ionized into its constituent ions, while the latter is only partially ionized, less than 5%. The reason is that options are ionization depends upon the strength of the bond and the extent of solvation of ions produced. Ionization depends upon the strength of the bond only, extent of solvation of ions produced. Hydrochloric acid is stronger than acetic acid. So, this question is about ionization, or here ionic equilibrium we are going to discuss. Now, it is said that एसिटिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को वाटर में डिसॉल्व किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा डिसॉल्व होता है, उसका जो मतलब वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, वेयरएज जो एसिटिक एसिड है ये पार्शियली आयनाइज होता है, दैट इज लेस देन 5%. तो इसका रीजन क्या है? सो द की कॉन्सेप्ट here is from ionic equilibrium. Ionic equilibrium. और आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर हम स्पेशलाइज थोड़ा सा बात करें तो इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे. So yes, let's see how on which factors ionization depends. So ionization depends some factors like the very first one is strength of bond. A strength of bond, or we can say degree of ionization depends on strength of bond. Then polarity also. Polarity and strength of bond are interrelated. Polarity, strength of bond, and solvation, extent of solvation extent of solvation of the ions formed of ions. So in all these factors, degree of ionization depends. Degree of ionization depends on all these factors: strength of bond and polarity and the extent of solvation of ions. देखते हैं कैसे. The solvation means interaction between ions of solute and solvent. Not ions, we can say molecules. These are the molecular interactions. These are the molecular interactions. So the force of attraction or the interaction between solute and solvent molecules is known as solvation. The greater the solvation is, greater the solvation or extent of solvation, greater will be the ionization. Greater will be the ionization. So let's see that अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई, ये जो इंटरेक्शंस होती हैं ये मॉलिकुलर इंटरेक्शंस होती हैं या फिर हम इन्हें वॉन्डरबॉल फोर्सेस भी कह सकते हैं. तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के जो इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं तो सॉल्यूट और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपस के जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे. यानी कि
हम ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक रिएक्शन है ए बी, ए कोई मॉलिक्यूल है एंड दिस इज डिसोसिएट्स टू फॉर्म ए प्लस एंड बी माइनस, राइट। तो अभी ए बी की जो इंटरेक्शन है, ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच के जो इंटरेक्शंस है, ये अगर कम होंगे और जो भी सॉल्वेंट है, लेट्स सी वाटर है, हमने उसको ऐड किया है यहाँ पे, तो ए बी और वाटर, वाटर भी ऐड कर देते हैं, राइट। लिक्विड, सॉलिड, एक्वस, एक्वस। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि इफ ए बी ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन और ये बॉन्ड अगर वीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम है, तो जितनी कम ये बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना अच्छा ये जल्दी जल्दी दूर जाएंगे, और जितना ए बी और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रोंग होगी, तो उतनी जल्दी ये जो है वो आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज सॉल्वेशन, राइट। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शंस स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आयनाइजेशन ज्यादा होती है, ठीक है। तो कंडीशंस फॉर मोर आयनाइजेशन, इफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन, एनर्जी विल बी लेस, तो आयनाइजेशन जल्दी होगा। और इफ इंटरेक्शंस बिटवीन solute and solvent particles is more, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं that extent of solvation is more, solvation is more। तो अगर दोनों ये कंडीशंस होंगी तो आयनाइजेशन will be more। So these are the factors which affects ionization. So the answer to our question is that ionization depends on strength of bond and the extent of solvation of ions produced। strength of bond पे कैसे कि अगर ये जो bond बने ये weak होंगे तो जल्दी टूटेंगे, right। and extent of solvation ज़्यादा होगा तो ionization ज़्यादा होगा। तो ionization depends on bond strength, and extent of solvation, extent of solvation of ions। Option number 1, option number 1 is our answer। I hope the solution was understandable. Best of luck.